को। तो आप सभी का स्वागत है आपके चहेते जानदार शानदार पॉडकास्ट में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक की, जो कि है एफएसजी हाय हाय या एफएसजी जिंदाबाद। मेरे साथ है रोशन समीर अन्नम, जो सिर्फ पॉपकॉर्न लेके बैठे हुए, उनकी कोई राय नहीं है ये सब्जेक्ट के ऊपर। और एफएसजी हाय हाय गैंग के मुखिया है विशेष चंदवानी, और एफएसजी जिंदाबाद की मुखिया है धवल मेरे साथ। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस डिस्कशन, एक मुद्दा ये बनता है कि ये चर्चा अभी हम क्यों कर रहे हैं कि ट्रांसफर विंडो फाइनली खत्म हो गई है। तो वो वेट एंड वॉच वाला जो मुद्दा था वो अभी फाइनली हम अभी विंटर में ही जाके कुछ भी करेंगे, वो विंटर में होगा। सो एक वो मुद्दा है। तो द रीजन व्हाई आई चोज दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ इज दैट, मतलब ये फोटो कब का है, याद आ रहा है किसी को? ESL लिखा है। Yeah, I think like apology videos ESL के समय पे हमारे ओनर साहब ने जब माफी मांगी थी, वो समय का फोटो है और ये स्क्रीनशॉट है। उसके अलावा भी उन्होंने काफी कांड किए हुए हैं साइनिंग ना करने के अलावा। और जैसे कि हाँ, फरलो कर देना, इतनी बड़ी क्लब के द्वारा लोगों को फरलो कर देना, ESL में चले जाना। सो दीज आर सम फेदर्स इन द इलस्ट्रियस कैप ऑफ आवर ओनर। सो उसके अलावा मैं एक सवाल तुम सभी के सामने रख रहा हूँ कि दिस इज अ कोट फ्रॉम बिल शैंकली, जिसका कल बर्थडे था, एंड द फादर ऑफ द रिसर्जेंस ऑफ लिवरपूल फुटबॉल क्लब। तो उसका कहना था कि माय आइडिया वाज टू बिल्ड लिवरपूल इनटू अ बास्टियन ऑफ इनविंसिबिलिटी। हैड नेपोलियन लेफ्ट had that idea, he would have conquered the bloody world. I wanted Liverpool to be untouchable. My idea was to build Liverpool up and up until eventually everyone would have to submit and give in. So दिल पे हाथ रख के अगर बताओ कि do you really think कि हम ये दिशा में जा रहे हैं as a club? Who are you asking? I'm asking everyone, like it's open for discussion. Like let me start with you actually. नहीं देखो, ये like the thing is ये जब कोट दिया गया था तब like it was a different time, ठीक है ना? like 60s 70s जो इंग्लैंड का जो टाइम था, like तुम लिवरपूल का देखो, like it was like more of a working class city and that sort of thing, ठीक है ना? वहाँ पे ऐसे सोशलिज्म का like सपोर्ट ज्यादा था। बट तुम आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखो, that like football is not like this anymore. It's like more capitalist. तुम्हें अगर साला चाहिए तो like you need to pay him 250,000 a week, ठीक है ना? साला will not work for socialism for $50,000 a week, pounds a week, ठीक है ना? तुम अपनी टीम इस तरह से like you can do that, but then you'll be in like League 2. तुम ये काफी डिफेंसिव आए हो। मतलब बेसिकली ये कोर्ट ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मेरे को लिवरपूल को एक तरीके से अनबीटेबल इनविंसिबल बनाना है। Yeah, but how do you make that? क्या वो इंटेंट हमारे मैनेजमेंट में दिखता है? माय क्वेश्चन इज सिंपल, Yes, हाँ या ना? लेकिन कॉन्टेक्स्ट वगैरह, बिकॉज सोशलिज्म यहाँ पे कहाँ से आया? बिकॉज सारे ही क्लब एक पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में कोई ऐसी क्लब्स नहीं है वो आर रूलिंग फुटबॉल। पिछले 5 साल में ही हमने देखा कि रियल मैड्रिड ने 3 साल में 3 चैंपियंस लीग जीत लिए। Yeah, so ठीक है, they are following different मैं समझ गया। So like, what do you need today for like success? अगर तो you say that I want my club to win like 3 titles in 5 years, 2 European titles in 5 years, ये सब जीतना है, like I want my club to be like Real Madrid. So Real Madrid is not winning with like just by having players out of their academy. They also spend a lot of money. जो पहले का जो टाइम था where like players would be found through academies, like local transfers and ऐसे Galacticos and like 100-200 million transfers. It's not that उस टाइम ऐसा नहीं था. So these principles would like really hold true. अभी नहीं है. Like today you have like gazillion sponsorship income, ये सारी commercial deals है. तुम्हारी क्लब की अगर commercial outlook है नहीं, तो then you just cannot grow. अगर तुम उस perpetual cycle में stuck हो गए, then you will not just for everyone. We also have that opportunity to market ourselves into 200 countries and earn a gazillion amount of money. What is stopping us from we are doing that. It's not that we do not do that. तुम Liverpool की because revenues FSG cannot have that argument that LFC is not marketable because they are here since more than a decade, I guess. Yeah, so they have had that time. Yeah. So let me just like explain that ऐसा नहीं है कि Liverpool का commercial income बढ़ा नहीं है. लिवरपूल का कमर्शियल इनकम काफी बढ़ा है in like last 7-8 years.
it was already on up since 21st century. बट वो जो थोड़ा ओनरशिप का चक्कर हुआ, डेट का इश्यू हुआ था 2010 अराउंड, उसमें थोड़ा सेटबैक लगा, और उसके बाद it has been rising. The only issue that most people are having is why are not we investing money in transfers? Yahi this is the primary thing. And there is a reason for that, but if you want to debate on that point specifically after, तो उसपे बाद में discuss करेंगे. बाकी other than that, the club has been running successfully. Club is largely self-sufficient. हमारा club का interest payments भी it's very low compared to other clubs. So commercial outlook is this. Okay, what do you have to say to this, Vishesh? You're mute. Yeah, hi. See, basically यार, I agree to the fact कि ठीक है, Liverpool एक मतलब वो work model बहुत अच्छा है, behind the doors and everything is good, fair enough. But yeah, this is Liverpool Football Club we're talking about and not a Liverpool business club that we're talking about. Self-running model है and all that, it is fine. But when it comes to FSG, अपने credit देते हैं कि यार नया stadium बनाया, नया training ground बनाया, पर वो थोड़ी उन्होंने खुद fund किया है. It is actually Liverpool as a club that is paying for that. जो extra seats भी लगाई है, it is actually a loan given out by the FSG to the Liverpool club, जिसका अपने interest के साथ पैसा वापस दिया. So it is not necessary कि मतलब अपने जो चीज को credit दे रहे FSG को कि भाई ये किया वो किया, that is fine, that is all acceptable, I'm not blaming that. But जहाँ players की जरूरत होती है, जब अपने Champions League जीते थे, we were at the prime, ठीक है, उस टाइम पे हेनरी का स्टेटमेंट आया था चैंपियंस लीग के बाद, ये बोल के कि नाउ आई वुड प्रोवाइड क्लॉप विद एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट ही वांट्स टू विन द प्रीमियर लीग. अपन ने किसको साइन किया? मीना और वो बच्चा सैप्टन वर्क जो भी था 16 साल का, दैट्स ऑल. और दूसरा ये अपना एड्रियन, जिसको कोई पूरा प्रीमियर लीग लेने को नहीं तैयार था, अपने वो 3 प्लेयर जाके लेके आते चैंपियंस लीग जीतने के बाद. ये तो वी हैव अ मैनेजर लाइक क्लॉप, जो साला ही इज गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट. जितने भी अच्छे प्लेयर्स है, we're not signing it. आज इसका चेल्सी का तुम देख लो, साउल 5 million मैन, that is nothing, that is like peanuts. Actually तुम प्रैक्टिकली देखने जाओ, लोन है 1 साल का ही लोन. हाँ with अरे option अपने to तो वो buy. भी या ट्रू दैट, बट अपना भी वो भी नहीं है भाई. आज जिनी क्यों गया? समझो बात को. आज when we are ready to pay, अगर आज जिनी 180 मांगता है वेजेस अपने वीकली, तो इट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज अगर अपने ऑक्स और केटा जैसे प्लेयर जो साल में 5 मैच खेलते हैं उसको 120-130 दे रहे हैं, तो फिर व्हाई नॉट जिनी? एटलीस्ट ही गिव्स यू 45-46 मैचेस. एलियट is never an option. ठीक है, एलियट इज प्लेइंग वेरी वेल एंड दैट इज अगेन फुल रिस्पेक्ट टू क्लॉप. ऐसा नहीं कि एफएसजी को पता है कि वो प्लेयर में इतना पोटेंशियल है और ऑल दैट शिट. आज हेनरी इज नॉट इन्वॉल्वड इन द क्लब एट ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ही इज अ बिजनेसमैन. उसको कोई वो क्लब से कोई वो इमोशनल अटैचमेंट या फुटबॉल सपोर्ट नहीं है, लाइक चेल्सी ओनर्स और एनीथिंग फॉर दैट मैटर. आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम वो कौन सी गेम देखने आया था हेनरी अपनी. बहुत टाइम हो गया अब तो. बट दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज के एलियट को होना चाहिए, बट वो बेंच पे आवे, पीछे से खेले. ही शुड नॉट बी अ स्टार्टर, दैट टू अगेंस्ट अ टीम लाइक चेल्सी. दो ही प्लेड फैंटास्टिक, आई एग्री टू दैट. वो उसमें कोई देयर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट. बट सेम गोज फॉर कर्टिस आल्सो. ये सब प्लेयर्स यार, ये तुम्हारे बेंच प्लेयर्स होने चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए. अभी तुम 18 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे को स्टार्ट करने लगो. व्हेन एंड बाय द वे, लिवरपूल इज द सेकंड बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड. चल ठीक है, यूनाइटेड ज्यादा बड़ा है, आई एग्री टू दैट, भाई फाइनेंशियली भी, कमर्शियली भी, इन एवरी मैटर. बट उसके अलावा भी थोड़ा बहुत बेसिक साइनिंग तो चाहिए ना. आज साला माने सब जनवरी में चले जाएंगे 1 महीने के लिए. अपने हर गेम वो लोग खेलते हैं बिकॉज वी डोंट हैव ऑप्शंस. अपने बोलते हैं क्लॉप रिजिड है कि भाई वो सब्स्टिट्यूट करता नहीं, पर वो लाएगा किसको बेंच पे? ओनली मिसिंग 2 games. व्हाटएवर इट इज, बट दैट इज अ बिग थिंग. अच्छा, मेरे को one more thing I would like to add to what Vishesh said was कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, हमको ब्रेंडन रॉजर्स के एरा में नहीं था, है ना, बिकॉज हमारे पास कुछ था ही नहीं एक तरीके से, या प्लेयर्स आने को तैयार नहीं थे, उनको लंदन चाहिए था वगैरह. बट व्हेन वी वन यूसीएल, है ना, वो टाइम पे क्या था कि लिवरपूल वाज द प्लेस टू बी. अभी है ना, लोग कम वेज लेके भी शायद आ जाएंगे, लोग कम साइनिंग, क्योंकि लिवरपूल पे खेलना है ना, हॉट एंड हैपनिंग जगह था. एंड एट दैट पॉइंट वी गॉट दीस 3 प्लेयर्स. वो टाइम पे हम बहुत ही अच्छे साइनिंग्स करके एक तरीके से ये दिशा में जा सकते थे जहां पे हम अगले आने वाले 2-3 साल में हाफ अ डजन ट्रॉफी जीत लेते. बट वी आर स्टिल इन दैट पोजीशन जहां पे हम कहते हैं कि यार लीग कप तो वी डोंट लाइक, एफए कप तो कहां इतना इंपॉर्टेंट है,
right? We are focusing on PL and UCL. So why do we need to be in this position? Like, let us go for all 4 trophies. I'm not saying win all 4 trophies, but let us at least try and be competitive for all 4 trophies. दूसरे क्लब्स भी कोई ऐसा नहीं है कि मेन प्लेयर्स को उतारता है लीग कप या एफए कप में, उनके भी यूजली उतारता है आखिरी ग्राउंड्स में, वो लोग सीनियर प्लेयर्स को उतारते हैं. So why are we, हम लोग शुरुआत के मैच में हम चेल्सी के सामने 18 साल के 19 साल के बच्चों से चालू कर रहे हैं. भाई एफएसजी का जो फंडामेंटल रोल मॉडल था कि भाई सेल प्लेयर्स एंड पैसा इकट्ठा करो एंड सामने बाय करो वाज फैंटास्टिक, बट दैट गॉट अस टू अ सर्टेन लेवल. अब अपने वो लेवल पे आगे कि वो पॉलिसी नहीं चल सकती. अब यू नीड टू लाइक डिग डीप इन योर पॉकेट्स, थोड़ा बहुत स्पेंड करना जरूरी है. आज एक्चुअली तुम देखने जाओ तो दिस ट्रांसफर विंडो अपना एक्चुअली स्क्वाड और वीकन हो गया. शाकिरी लेफ्ट, जिनी लेफ्ट, सामने आया कुछ भी नहीं. So the point is यार एक लेवल तक you can get to that point through that policy के ठीक है buy sell किया buy can see honestly this all happened because of Coutinho. He wanted to leave. ये भी नहीं है कि FSG उसको बेचना चाहती थी. It was Coutinho who was very adamant जिसको निकलना था, and then we got the money and all this transformation started. So we got to a certain level. Cool, fair enough, very good by the FSG. ठीक है, Edwards ने भी बहुत solid काम किया. Coutinho का जो पैसा आना चाहिए था कुछ ज्यादा ही आ गया. From like मेरे expectation से तो बहुत ज्यादा आया. बट अब उस लेवल को मेंटेन करने के लिए टू बी एट द टॉप, सी द पॉइंट इज चेल्सी, सिटी, यूनाइटेड, इवन टीम्स लाइक लेस्टर, वो लोग डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेयर्स. अपने वही लेवल पे अटके हुए हैं तो कुछ दुनिया रुकने नहीं वाली अपने लिए, सारी टीम्स रुकने नहीं वाली अपने लिए. तो अपने यार ये भाई फाइनेंशियल फेयर प्ले और ये सब बोल के यार नहीं स्पेंड कर रहे, दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी. मेरे पास 2 पॉइंट टॉपिक ऑफ स्पेंडिंग. let Roshan finish his point. let Roshan finish. मेरे पास 2 पॉइंट है. हम लोग यंग प्लेयर्स को चांस देने की बात कर रहे थे ना, तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड हिज फर्स्ट मैच वाज अगेंस्ट यूनाइटेड. सो अगर हम उनको चांस नहीं देंगे तो लाइक सो मेरे दिमाग में आई एम नॉट लाइक बैकिंग एफएसजी, लाइक उनको ऐसे अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है मेरे तरफ से. देयर आर प्रॉब्लम्स विद देम, बट आई थिंक हमने फंडामेंटली 2 चीजों से मूव ऑन किया है. इज व्हेन ब्रेंडन रॉजर्स वाज इन चार्ज, हमारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर Ian Iyer was responsible for signings, so he would say नहीं तेरे पास चॉइस नहीं है, इसी को लेना है. तो हम अलेक्सिस सैंचेज से बालोटेली पे आ रहे, तो ये हमारा सिचुएशन था. एंड इफ क्लॉप सेज दैट ट्रांसफर्स पे उसका फाइनल से है, I will trust him. At this moment, I trust him. And so, if he thinks that letting go Shaqiri and Wijnaldum will not affect us because he believes in Elliott and Curtis Jones, that will come in future. आएगा. Trent Alexander-Arnold ने तोड़-फोड़ तो नहीं मचाया था. It took him 1.5 seasons to get into the team. So at some point, there is this period where you have to stick with the players that you have, believe that they can do it. I'm not saying कि हमें signings नहीं करने चाहिए. ऐसे, to be honest, मैं खुद frustrated हूँ क्योंकि we could always sign a number 9, box number 9 who could, like someone like Edin Dzeko, someone like a Timo who could like finish. जो Diogo Jota कर सकता है, we'll have to see this season how that works out. But वो frustrations तो हैं, and I agree. But the other thing is कि from our perspective, if you see, do you want to keep the same players who delivered for you, or do you want to like overhaul the squad? Let's say इस साल हमने almost जितने भी players हैं, 7-8 players, we renewed their contract, like long term contracts किए हैं. So I think executive decision would have been कि like अच्छा ये लोग अपने final पे हैं, they are 29-30, they'll not perform. उनका जो peak था जहाँ पे हमने तो 4 trophies एक साथ जीते, that was their peak, and let them go and get some more people. Was that a decision for us, or did we want to stick with them? तो वो like वो conundrums तो हमारे general life में है ही. It is very unfortunate that we don't perform, and then like एक expectation तो है ना, like when you get someone like someone like Amina, someone like Anox, and someone like Keita, ऐसे ही they were not panic buys, right? They were scouted, they were looked after. उनका गेम प्ले है, it just is difficult. Injuries आ जाती हैं. You are very England is not an easy place to get settled into. So all of that, and again, there is another. I guess आगे जाके what one thing we should definitely get good at is if a player is not performing, give them an ultimatum. Say भाई तेरा नहीं चल रहा, हम तेरे को बेच देंगे. I think that hard talk has to happen at some point, which FSG or Klopp, because of the management is already happening यार. अभी ओरिगी और शकीरी को मतलब कितनी बार मुंह पे बोला गया है कि तुम लोग निकलोगे तो ही हम सामने कोई प्लेयर खरीदेंगे.
मतलब that doesn't make sense to me. मतलब you have to respect the contract you signed. अभी शकीरी यार जितना वो खेला है मेरे हिसाब से तो बहुत खराब नहीं खेला है, उसको चांस ही बहुत कम मिलता है. ठीक है, इंजरी प्रोन था, तो एक तो वो प्रॉब्लम भी है. आई थिंक द अदर प्रॉब्लम इज दैट दीज प्लेयर्स they have been fit for like 4 years. उन्होंने 4 years में I guess like 10 games भी miss नहीं किए होंगे. I mean the core players, right? So about signings, sometimes players don't want to play second fiddle. They don't want to be a shadow. They want to be on the field. So if you consider Salah, Mane, Firmino, if they are about to start, someone like a great winger, let's say, अभी मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा, but if we think someone is a great player who wants to come in, they don't want to sit on the bench, right? And उनको chance कब मिलेगा जब कोई injure होगा. And so true. So nobody wants to play second fiddle, and that is another reason that I think we haven't made signings. And I understand that our bench does not match it, but yeah, I guess we have to live with that right now. बट यार जब साउल जैसा प्लेयर जो चेल्सी में हर गेम नहीं खेलने वाला है, ही इज अ स्टार प्लेयर, मतलब डे इन एंड आउट खेलता था एथलेटिक प्लेयर, ही इज रेडी टू मूव इन, तो आई एम श्योर भाई लिवरपूल का कोई उससे कम ज्यादा वो नहीं है भाई वैल्यू के, भाई वहां पे भी प्लेयर्स नहीं आएंगे. सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे न्यूकासल ने विल्सन को 12 मिलियन में उठाया, मतलब वो भाई आके बेंच पे बैठने को फुल्ली रेडी होता है. ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम होता कि वो बेंच पे नहीं बैठता. इंग्स जैसा प्लेयर अपने बेच दिया, आज पड़ा रहता अपने पास स्ट्राइकर, अपने ओरिगी को रिन्यू किया क्योंकि एक चैंपियंस लीग में गोल मार दिया उसने, ठीक है उस टाइम पे अच्छा खेल रहा था नो डाउट, बट अपने को हमेशा से पता था उस बंदे में पोटेंशियल नहीं है. शकीरी को भी स्केपगोट इसलिए बनाया गया क्योंकि उसका अपन ने उसको बाय किया बहुत कम प्राइस में, 12 मिलियन में उठाया था, इसलिए वो बेच सकते हैं, लॉस वहां पे नहीं है. यही एक्चुअली तुम देखने जाओ तो ऑक्स और केटा को क्या इतना महंगे में उठाए 35 और 50 जितना आई रिमेम्बर, तो तुम बिकेगा नहीं वो प्राइस में, इसलिए तुम उनको स्केपगोट नहीं बना रहे हो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है बट टू कीप देम इन द स्क्वाड. See, I don't think Ings के case में we wanted to sell him. We every intention was to have him play in our squad. Injury के बाद he never found his place, and so just a sec. We don't know what those players wanted. Yes, so like these are speculations. These are not even reported in media. Like Origi wanted this, like Genie wanted this, Ings wanted this. These are just speculations that we are going off. Yeah, अपनी है like these are, we should not be like taking them as the truth. नहीं ठीक है, बट जैसे अभी शकीरी का मैंने देखो बोला तुम लोग को, आई मीन ऑक्स ने भी कुछ किया नहीं अभी तक, बेंच पे ही बैठा रहा है पूरा सीजन, इंजरी में बैठा रहा है, सेम गोस फॉर केटा, बट इट्स जस्ट दैट उनके बाइंग प्राइस इतने ज्यादा है कि अपने उनको बेच ही नहीं सकते, कोई टीम खरीदेगी नहीं. वेयर शकीरी गेम फॉर 12 मिलियन, तो अब 8 में गया तो 4 मिलियन का नुकसान तो उठा ही सकते हैं, वहां वो नुकसान उठ नहीं पाएगा. वी आर आल्सो अज्यूमिंग, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑक्स को क्लॉप को बेचना है, लाइक वी डोंट रियली नो दैट क्लॉप का प्लान क्या है. Somebody needs to take harsh decisions ना कि okay मैं एक चीज बताता हूँ, like let me just say one thing. तुम इन सब चीज में you are just ignoring कि like what is Klopp's role. First of all, Klopp ने तुमने मीना को Klopp ने कितनी बार खिलाया? How many times fans have demanded? Klopp अपने बस चुनन 14-15 जैसे स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो डू वी नो एक्चुअली क्लॉप वांटेड मिनामिनो कि वो वहां पे अच्छा खेल गया, एफएसजी सॉ दैट वैल्यू इन. वही चीज मैं बता रहा हूँ कि लाइक यू सी लाइक हमने पिछले 2-3 साल में प्लेयर साइन किए, उसमें से ज्यादा खिलाया आई थिंक जोटा को. इवन कीटा डज नॉट स्टार्ट ऑल द गेम्स probably because of injury. Ox we know that doesn't start games because of like injury, but Klopp is like always playing this limited, like 14-15 players वो last season they were out injured, इसलिए like we played more players. बाकी तुम देखोगे his team is fixed. He does not even rotate like between mid weeks and things. तो पहली चीज है कि Klopp uses less players. He likes to like वो अपना एक ग्रुप अपना होता है उसी को यूज करता है. And वो philosophy तुम उसको और 10 players लाके दोगे and he is not gonna use them. So first of all, तुम्हारा manager like he is happy कि मेरे को इतनी players चाहिए, I am happy with them. Then what will you do? Like then if the owners are also like कि हाँ हमें we are not interested in like spending like gazillion money, then that's a great partnership. ये इन लोगों ने जब अपना contract sign किया होगा, then these people definitely talk. मेरा ये प्लान है, what is your philosophy of like in transfers and playing players? So
Double, are you implying that Klopp didn't want the fourth centre back last season? That's what I'm saying. You are like, you are taking my words out of context. Right back में Nico Williams अपने लिए खेले वो उसका. Again, that is speculation, bro. That is speculation. That is going to be speculation. And even if that is the speculation, the thing is, that's a fan speculation. It doesn't become the truth. ऐसा रहता है. मेरा understanding ऐसा रहता है कि even if Klopp is saying, because Klopp है ना जनवरी में तो आके रंडी रोना चालू कर देता है कि यार मेरे पास मैं नहीं खेल सकता, मैं नहीं सही है ना. क्लॉप कौन सा आके बोलता है नहीं मेरी टीम तो बिंदास खेलेगी. क्लॉप कौन सा बोलता है? क्लॉप आके रोता ही है, नहीं वी आर नॉट मैनचेस्टर सिटी, वी कैन नॉट कम्पीट लाइक देम. वो तो क्लॉप रोना धोना तो करता ही है. सो लेट अस नॉट से कि क्लॉप इज फुल्ली सेटिस्फाइड विद हिज स्क्वाड. आई एम नॉट सेइंग कि ही इज, और वो है ना एज अ मैनेजर जब उसको पता है कि साइनिंग्स नहीं हो रहे तो ही इज नॉट अ मोरिनियो जो कि मीडिया में जाके बोलेगा कि मेरे को तो ओनर्स ने मतलब कहते हैं ठग लिया है. नहीं, बट so the thing is, I understand your point. Klopp is not that kind of manager जो कि अपने बंदों का मोरल डाउन होने दे. Okay, let me just finish my original point. And last point मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि even if Klopp बोलता है कि यार मेरे को नहीं चाहिए प्लेयर्स, फिर भी FSG should be adamant कि भाई कहते हैं ना वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी 50-60 मिलियन में कुछ ऐसा ये बैकअप रख ले, है ना. कोई एम्बापे हालांड को हम नहीं मांग रहे, हम कह रहे कि एक फोर्थ सेंटर बैक जहां पे तुम्हारा फेबिन्यो जैसा प्रीमियम मिडफील्डर को तुमको सीबी ना खिलाना पड़े, वैसा कुछ साइनिंग कर लेते. First of all, like this is like lots of fans talk like this, and I understand. But Liverpool is not in position to buy 100 million players each season. I'm not even asking for it. I'm asking. Nobody's asking for that, bro. That is the only way fans will be satisfied. Like tum bro. So okay, let me finish my original point. You cut me. Yeah, go on. Yeah. मैं वही बता रहा था, like there is this balance between the transfer, like जो भी Edwards and his team and Klopp, वो दोनों मिलके ही डिसीजन, लाइक दे आर टेकिंग डिसीजंस. आई एम प्रीटी श्योर कि अगर क्लॉप के आउट करके बोला होता कि भाई हम प्लेयर्स बाय करेंगे, देन यू हैव टू जस्ट प्ले देम, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. व्हाई वुड द क्लॉप देन साइन कॉन्ट्रैक्ट, लाइक अ लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है ना. So these are the things that we also have to like understand from like how these people last season की अगर तुम बात करो like for center back, yeah, definitely that was a bad decision, but that was a bad decision originally taken in the summer by both these people, Edwards and Klopp, कि मेरे पास 4 center back है, मैं चला लूंगा. So both of them are responsible for it. I'm not even saying कि like you know, 4 भी कौन से भाई, 3 थे और उसमें से भी मैटिप जैसा धांसू आदमी जो कि फिट रहता नहीं है. या फॉर व्हाटएवर जो भी डिसीजन लिया था उस सेंटर बैक सिचुएशन था जिसको तुमको सैक्रिफाइस करना पड़ा. तुमने सेंटर बैक पूरी गेम की बैंड बजा दी थी. या बट सो द थिंग इज लाइक माय पॉइंट इज कि उस टाइम में दोनों को रिस्पांसिबिलिटी लेनी थी और दे बोथ ऑफ देम टुक रिस्पांसिबिलिटी एंड लाइक फैंस. अरे ये कैसा चीज है, ये कैसा चीज है कि यार मेरे पिताजी अगर मेरे को पैसा नहीं दे रहे और मुझे कहीं जाना है ना, तो मैं बस से भी जाऊंगा, है ना. मैं जाना नहीं चाहता. I would like to take an Ola. पर मैं EMTS से चले जाऊंगा. मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि समझ रहे हो, मैं वो दीवार के विजय की तरह थोड़ी लिखवाऊंगा मेरा बाप चोर है. वो तो मैं चले जाऊंगा. ये तो क्लॉप ने भी यही किया. तुम सिमेंटिक्स यूज फेबिनो खिला के यही किया. सुन मेरी बात सुन. तुम सिमेंटिक्स यूज करके लाइक यू कैन मेक एनी ऑफ योर पॉइंट, बट द थिंग इज कि हमने जो इस सीजन हमने जो मिडफील्डर और एक डिफेंडर, लाइक डिफेंडर तो चलो साइन किया, बट मिडफील्डर साइन नहीं किया. दैट इज अ प्रॉब्लम दैट आई कंप्लीटली एक्सेप्ट दैट वी शुड हैव साइंड अ रिप्लेसमेंट ऑफ जीनी वाइनाल्डम. आई कंप्लीटली एग्री. मैं तो ऐसा बोल नहीं रहा कि हमें कोई ट्रांसफर करने ही नहीं चाहिए, बट व्हेन there are no players that these people want, that the club says, oh, I don't want Saul. Like we are saying, yes, Saul was available. If Saul was available, why didn't we buy it? Probably because we didn't want him. 5 million. I think I'm pretty sure कि 5 million per season Liverpool can easily afford. And they did not buy him. अगर लेना ही था टीमों के साथ, तो he was talking, right? He was personally talking to Timo, but then he was. But then अपने जोटा आ गया. आ नहीं गया. हम like that is what we had think. This intention because he had the budget to buy a player. He was given money. He was allotted money कि भाई तू इतना पैसा ले और जाके एक player लेके आ. But उसने वो नहीं तो वो लिया. But do you know the deal?
कि we were just paying only 10% of the total money to get Jota to play, and we had to pay in full for Timo. So हम लोग, so those are the things. I mean, हमें ये भी consider करना है कि again ये बात है, are we happy with just having the best of the players and let's not win anything, or what is happening right now? Like कि हम सारे talent pool को उठा के अपने पास रख लें, then we should definitely not invest in the young squads, and then let's give up on that and let's save all that money, all those contracts to invest in the main team. Like हम ऐसी बातें कर रहे हैं फिर तो then we are talking beyond some logic, and we are not talking, हम लोग emotionally बात कर रहे हैं, हम लोग logically बात नहीं कर रहे. See, when it comes to the center back issue, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ last season issue था. उससे पहले एमरे खेलता था अपने center back, लॉवरेन, मैटिप और वैन डाइक से तो पहले ये तो और इशू थे, बट चलो वैन डाइक आया फिर भी सॉर्ट हुआ थोड़ा बहुत इशू, बट हर सीजन अपने सेंटर बैक के लिए सफर किया है. तो ऐसा तो नहीं है क्लॉप इतना बेवकूफ है कि उसको पता नहीं कि आई नीड अ सेंटर बैक डेस्परेटली. हर सीजन में ये इशू आया, नॉट जस्ट लास्ट सीजन. चल एक सीजन का होता है, अंडरस्टैंडेबल के क्लॉप से हो सकती है मिस्टेक, बट दिस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द पास्ट 3-4 इयर्स नाउ. सेंटर बैक का इशू हमेशा से रहा है. अपने बच्चों को खिला रहे यार. आज सिंपल सा लॉजिक है, लेस्टर जैसा क्लब, अभी उनका वो मेन सेंटर बैक, आई फॉरगॉट हिज नेम, वो इंजर हो गया. Immediately they went out and signed a new player. A club like Leicester can do that. तो अपने तो भाई विंटर में 16 साल बट लेस्टर के क्वालिटी के लिए अगर उनको प्लेयर सही लगता है तो वो लेगा. Why would Klopp want to buy a player that he does not want from the pool that is available to him? तुम उसके पर्सपेक्टिव से सोचो ना. So Adrian was so basically हाँ, Adrian क्या था भाई? But that's what I'm saying. Basically तुम्हारा एंगर जो है मिसगाइडेड है. Anger, if you are angry, we should be angry at Klopp for not doing proactively things. No. Why not? Why not? Yeah, you're telling me what you're trying to say is कि अपना जो सारे when Matip, Van Dijk and Gomez तीनों injured बाहर बैठे हैं, so Klopp is happy to play a 16-year-old and a 19-year-old kid from the Liverpool under-23 team, and he's got no player to buy. Yeah, he actually brought in Elliot. अगर तुम उसका इंटरव्यू देखोगे तो he was impressed with Elliot and he said कि नहीं इस बंदे को मेरे को टीम में लाना है. सेंटर बैक की बात करें, सेंटर बैक की बात करें. तो उस टाइम में रीस विलियम्स भाई हमारे चलो he trusted Reece Williams. And how do you say that? Why did Klopp play? If Klopp trusted Reece Williams, then he played. You cannot go on and say that like क्यों Reece Williams को खिलाया. So you are saying chose Reece Williams as a backup, so he played Reece Williams. You cannot go and like say that why तो मुझे Reece Williams पसंद नहीं है. भाई you're taking it in the wrong way totally bro. My point is not that कि क्लॉप ने उसको क्यों खिलाया, और मैं उसको क्वेश्चन भी नहीं कर रहा हूँ. खिलाया, इनफैक्ट इतना अच्छा परफॉर्म करवाया कि शायद और कोई मैनेजर नहीं करवा पाता. But my point is, when your club is suffering so much, why not go and sign out a new player? And ऐसा नहीं कि क्लॉप ने नहीं बोला होगा मेरे को सेंटर बैक चाहिए. भाई वो इतना बड़ा टॉप लेवल का मैनेजर है, उसको भी ऐसा होगा भाई और उसमें भी बच्चा है भाई 16 साल 18 साल का. I'm sure he would have had I agree. Look, सुन मेरी बात. I agree कि January में we should have bought a defender like in 2019-20 That's the very point. Yeah, but so there was a mistake made. I'm not saying कि किसी ने परचेज नहीं किया. That was a gross error कि हमने डिसाइड किया कि हम रीस और फिलिप्स पे ट्रस्ट करेंगे and we'll just like keep playing them. But that should not have been done. But that does not mean that you just keep making points which are actually like full without any logic. कोई बात एक चीज का यूज करके you cannot just keep saying okay FSG like I'm not like some like मैं ऐसा नहीं कि I always like FSG. If FSG does a bad thing, then I will say that FSG has done a bad thing. Again, wait, does not mean this is just like let us just take a look at the graph. विशेष ने जो सेंटर बैक का बात होता है ना, that was a very good example. कि सेंटर बैक का इश्यू we are must understanding कि ये सिर्फ पिछले सीजन का है. वो हमने पुराने जमाने में पिछले सीजन का है. We always had center backs. We sold Klavan and Lovren. We had 5 center backs. The only time we had an issue with center back was 15-16 season. जब हमारे सारे center backs were injured in 15-16. That's when we went and bought. I think I forgot his name. नाम क्या था? Sakho. Klavan.
No, not Klavan. 15-16 में एक English defender था, हमने January में खरीदा. Steven Cocker. Yeah, Cocker. Like that was the only time when we had center back. खेला ही नहीं, उसको center forward ही खिलाया था 2-3 game में. Because next month हमारे सारे center backs हो गए and they were back. So that was the only time we faced center back issue. Not before last season. क्या बात कर रहे हैं bro? अपने कितनी बार problem हुआ है. 15-16 के बाद so many times Hendo was used as a center back. अपना Emre was used as a center back. Lovren was injured. So those were like small matches and things like that. We never had good games, Premier League games I'm talking about, bro. क्लब वर्ल्ड कप में खेले हुए हम हैंडरसन के साथ, तब तो काफी बड़ी गेम्स में खेले थे. क्लब वर्ल्ड कप चलो आई एग्री इज नॉट दैट ह्यूज फॉर मी पर्सनली. ठीक है चलो ट्रॉफी जीते अच्छी बात है, बट ठीक है, बट मेन प्रीमियर लीग गेम्स में maybe because of कोई इंजरी की वजह से. there was not a crisis that there was like last season or 15-16. अरे यार तुमको हर 6 महीने पे कुछ ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो लाइक यूनिवर्स इज टेलिंग यू तो 15-16 और 19-20 में कितने 5-6 महीने का डिफरेंस है. यू आर सेइंग लेट अस जस्ट टेक अ लुक एट दिस टेबल ना, कि पिछले 5 सालों का ये जो स्पेंडिंग है, मतलब लॉर्ड राजानी ने दिया हुआ है, सो आई विल ट्रस्ट हिम दैट परचेज ग्रोस जो है उसमें एवर्टन हमसे ज्यादा है. ठीक है, एवर्टन का लेवल ही हमसे कम था, तो ऑब्वियसली दे हैव टू स्पेंड मोर देन अस टू come to the level of LFC, and they have still not managed to do that. I would concede to that point, but even Brighton has better net spend than us. But does Brighton won how many titles and how many Champions Leagues? See, you are saying that spending more money is guarantee that you will. See, Dhaval walked right into my trap and he asked me how many titles did Brighton win. Should I tell you how many titles did Manchester City win? Yeah, but how does Manchester? Okay, yeah. Chelsea win? I agree. How exactly? What is the source of Manchester City's income and Chelsea's income? What is source की बात कर रहे हो तुम? हाँ, Manchester City और Chelsea में पैसा कहाँ से आता है? Like, how do you think they invest money? Not my problem. समझो, ये कोई why is that not your problem? Why? See, that is what we are discussing. Liverpool Football Club and not a Liverpool business club. Understand my point? But the thing is, like, a club is a business. Like, you cannot just like hope that you cannot hope that like I will spend 200 million and just pull money out of it. ऐसा कौन डिमांड कर रहा है ब्रो? हम लोग एम्बापे और हालैंड की डिमांड भी नहीं कर रहे. The point is कि 20-25 मिलियन में अच्छे प्लेयर्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं आ सकते. Not really, not the ones that Liverpool want for quality. Like, would you be happy with Jared Bowen? लाए ना, 35 मिलियन में झोटा लेके तो आए. हाँ, क्यों नहीं? 12 मिलियन में झोटा is an exception. अच्छा, तुम like अरे 12 मिलियन में विल्सन गया, 30 मिलियन में थियागो लेके आए. और इवन हमारे कंपैटिटर क्लब्स ने जो प्लेयर्स लिए हैं, अच्छे साइनिंग्स जो किए हैं पिछले कुछ समय में, उन्होंने 30 से 40 मिलियन में हाफ अ डजन प्लेयर साइन किए हुए. लुक एट चेल्सी, हां, ज़िएक देख लो, हेवर्ट्स देख लो, सब अच्छे प्राइस में, कोई ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस किसी का भी नहीं दिया. Havertz was like 60-70 million signing, so I don't think that falls in that category. अरे तो कीटा तुम ऐसे मार्केट में बात कर रहे हो जहां पे बेन वाइट को 50 मिलियन में ले रहे हो, और तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 25-30 मिलियन में तुम्हें गेम चेंजिंग टाइटल विनिंग प्लेयर मिलेगा. दैट इज योर not even but अपने we don't need such players game changing. अपने पास already है वो players, तो उनको support चाहिए. मेरा point वो है. But also playing 11, we have an excellent playing 11. स्क्वाड है ना, वो ये लेवल पे है. हमारा स्क्वाड ये लेवल पे है, और हमारा बेंच है वो एटलीस्ट ये लेवल पे, तो हम सीधा मतलब कहते हैं ना 50 फ्लोर्स ऑफ पाइल्स ऑफ शिट उस पे आते हैं हमारे बेंच के ऊपर. जब आते हैं हमारे जो बेंच के लोग हैं जिसको हम गिनाते हैं, ओरिगी, कीटा, ऑक्स, ये लोग जस्ट नाम गिनवाने के लिए तुमको लग रहा है, बट दे आर नॉट इवन लाइक व्हेन दे आर प्लेइंग. लिवरपूल तो ये स्टार्टर हो गए, अब तो ये बेंच भी नहीं रही. कीटा तो स्टार्टर हो गए. At the end of the day, that the debate comes to like, fans think that these players fit. Fans always like think, and I respect like fans are not like stupid, ठीक है ना? But of course, what does your manager really want? Does your manager really want those players? Like, at the end of the day, debate comes to this. This is the whole point of the source of our frustration, that the FSG, even though you said that you are not a big fan of FSG, you would criticize. I have not seen you done that, but anyway. I just did. I said कि last 19-20 January में they did not buy it. Blame shift करते हो. I have seen FSGVs जो जैसे है ना वो आया था, वो
you are also not acknowledging जब हमने सिटी एंड चेल्सी हमने जब सिटी एंड चेल्सी का पूछा तो you are not accepting the fact that like they have that resource. नहीं अरे विशेष तेरा नहीं, आशु बोल रहा था ना कि like हम blame shift कर रहे हैं. मेरा फ्रस्ट्रेशन ये है कि FSG के जो एकदम प्रेमी लोग हैं ना, वो लोग एक तरीके से क्लॉप को somehow कहते हैं ना, वो बता रहे कि क्लॉप ही पागल है. I have a problem with that too. Exactly. क्लॉप ही पागल है, वो मांगता नहीं है. बाकी FSG तो बैंक खोल के बैठा है. एक ही justification आता है कि what if Klopp does not need that player? What if Klopp is like that? वो I don't buy that justification all the time. कभी-कभी चलो first of all what needs to happen. I agree कि क्लॉप का जो philosophy है, क्लॉप एम्बापे हालांड नहीं मांगेगा, but क्लॉप एक सेंटर बैक तो ढंग का मांगेगा. तो लिया ना तो अगर तुम कोनाटे को बिना खिलाए क्लॉप को जिस तरह से बदनाम करने की जो साजिश होती है ना, क्लॉप को बदनाम करने की जो साजिश होती है, जो साला के सामने ये लिवरपूल इको के अंदर जो स्मीयर कैंपेन हुआ था बीच में लास्ट ईयर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं दैट मेक्स यू मोर फ्रस्ट्रेटेड टुवर्ड्स FSG. Yeah, so no, like the thing is Klopp is also not infallible. Like if you are going to like assess people like objectively. नहीं मतलब मेरे को अगर किसी को ट्रस्ट करना है, मेरे को ट्रस्ट करना है किसी को, क्लॉप को और FSG को, I would trust Klopp 7 days fine, which is completely fine, but that does not mean that you paper over cracks like across everything, that you just use it. What are the cracks? He played Jota, which like most of like fans with like half the brain thought was a bad idea, but he played him और वो injured हो गया. Then we faced the biggest crisis, like apna forward crisis. That was Edwards didn't come and Henry didn't come and tell him that you played Jota. So all these things happen. It's not that it doesn't happen. Like एक club hai, it happened. Chalo, now we have to move on. That nothing else can be done to like rectify. और एक चीज है अगर like if you're talking about Klopp का fallacies, right? Like what he has. अगर if you are saying that it took him a long time to take cognizance of center backs, then we as fans have been crying for a number 9 who just needs to finish, right? Bobby नहीं करता है, हमने 5-6 साल में देख लिया है, तो why don't we fix it? Why doesn't Klopp come out and say कि मेरे को ये striker चाहिए? तो he also tries to save his ass sometimes, and हम लोग को उसके लिए accountable समझ रखना पड़ेगा. Also, I want a forward since 17-18 season. मेरे को number 9 चाहिए. Yeah, I wanted Timo Werner, but वो deal हुआ नहीं. इतना desperation था fans में कि we were okay with Alex Teixeira, जो बॉल को गोल में ठोक सकता था. So वही बात है कि like अगर at some points FSG does not support, but at some points Klopp is rigid with his ideas of how the team should be, and वो दोनों ही problems हैं. Yeah. We cannot put blame on either of the people completely and solely, and the combination of that has led us to being frustrated, which we are today. And that's both things can be true. Like it's not like you cannot blame one like entity exclusively. Like do I think a squad में investment कम है? Yes, I'm not saying, I'm not even disagreeing that there is we could have like maybe like invested maybe 30-40 million more even this season, even last season. I understand. हमारा net spend कितना है इस season का, ध्यान में किसी को? 6 million positive. 6 million positive. I don't know, हमने कोनाटे कितने मिले था मुझे पता. 35 positive 6 million. Yes, 6 million positive. See again, that says so. But it's not like we did not spend money. Like we renewed the contracts and see again. I have a problem with that also. इसको हम क्यों celebrate कर रहे हैं? हर टीम का celebrate कर नहीं रहे हैं भाई. But अरे वेज बिल भी तो बढ़ रहा है ना. तू किसी को 180 से 270 दे रहा है, तो combined 7 players multiplied across 10 months of the season. It is huge enough that we cannot sustain it with expansions going on. मतलब this is like हर क्लब कर रहा है. अरे बाबा, मेरे को चीज समझा रोशन, एक चीज समझा. 2009 के अंदर अगर तुमको बोलते कि जिरार्ड का कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सटेंड कर रहे हैं ना, लाइक खुश हो जाओ, तो तुम खुश होते. ऑब्वियसली यू हैव टू ब्लडी एक्सटेंड दिस कॉन्ट्रैक्ट. तुमको यहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम. तो ये तो साला की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए मैं क्यों खुश हूँ? वो तो करना ही था.
तो खुश हो, वो अरे नहीं भाई करे खुश तो हो। प्रॉब्लम है, करे तो इट इज नॉर्मल अरे ओनली। द पॉइंट मतलब वो नहीं है यार, Yeah, point but the मेरे thing को is, you're missing, extending a contract costs money, more हाँ money. वो you भाई It does missing not it। mean कि तुम like it just the money just grows into a bag and like 16-17 साल की लड़कियों का मैंने इंस्टाग्राम पे एक वो देखा था पोस्ट के कहते ना स्टॉप hyping boys who are doing just bare minimum for you. Yeah, what you're talking, and I'll give it this message, stop hyping them up for doing just bare minimum. अरे भाई तू सिमिलरली क्या बात कर रहा है पता है, जो बार्सिलोना है, सारे दुनिया जहान के प्लेयर साइन करो, अपना वेज बिल 95% रखो, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन पुश कम्स टू शव तुम अपने प्लेयर सेल करो। FSGVs का है ना, ये नया हॉबी है कि हाँ बार्सिलोना ये बार्सिलोना का ऐसा है तो हमारा ऐसा नहीं है, मतलब बट ये तो प्लीज देयर हैज टू बी मनी मैनेजमेंट ना, ऐसे थोड़ी उड़ा सकते हैं। अरे तो किसी दूसरी से- टीम भी तो उड़ा रही है ना, थोड़े टीम लाइक reasonable- रोशन, शेफील्ड तुम थोड़ा यूनाइटेड reasonable is आदमी है। spending more. Do you know this? Like a championship club teams, like a couple of them are actually spending more than what Liverpool, our championship team, spend कर रही है ज्यादा। तो वो लोग क्या ऐसे ही चल रहे हैं क्या? तो ट्रांसफर मनी की बात कर रहे हैं कि इन वेज की बात कर रहे हैं? ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ मैं, एज डिफरेंस है, आई अंडरस्टैंड। फॉर व्हेन इट कम्स टू वेजेस तो यार आज चेल्सी भी देने को तैयार है, सिटी चल दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनको तो हटा ही दो। आज लेस्टर इज आल्सो साइनिंग सम डिसेंट प्लेयर्स, तो वो प्लेयर्स ऐसे नहीं है कि वेजेस बहुत कम है। तू जिन क्लब्स की बात कर, चेल्सी जैसे क्लब्स, दे रोटेट देयर प्लेयर्स, वो आते हैं 2-3 साल में चले जाते हैं। ये प्लेयर्स को इफ यू हैव टू हैव द लेगेसी ऑफ कीपिंग दिस प्लेयर्स विद यू, देन देयर इज मनी टू बी, उनके ओनर्स लॉस बेयर करने को रेडी है। यहाँ अपने ओरिगी को बेचेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अपने को नॉर्मल फेयर प्राइस मिल नहीं रहा है, जो एफएसजी या ओनर्स या एडवर्ड्स की जिसकी भी एक एक्सपेक्टेशन है वो प्राइस मिल नहीं रहा है। आई एम श्योर ओरिगी के लिए बिड जाएंगे, बट ऐसे बिड जाएंगे क्योंकि अपन ने उसको इतना डिग्रेड कर दिया एज अ प्लेयर, तो कौन बिड करेगा उसके लिए? कौन ऑक्स जैसे इंजर्ड प्लेयर के लिए बिड करेगा? कौन केटा के लिए बिड करेगा? तो खिलाओ उनको, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। also like at the end of the day thing is like all these the other clubs है, those are like state-backed clubs. They can afford to lose like lots of money. Like the owners that we have. Manchester United is not state-backed, is it? चलो ठीक है, Manchester उनका United यार already प्रॉफिट has a बहुत bigger ज्यादा operation. है। Manchester Yeah, United is Manchester, actually I don't much compare. larger club. But even Dhaval, अपना भी प्रॉफिट every year has been increasing on a very sizable amount. I agree. But I उसका agree. सामने reinvestment कुछ नहीं है। See, if you tell me about the stadium or the training center, वो सब पैसा लोन पे दिया हुआ है to the club only, and वो इंटरेस्ट के साथ वापस जाता है। मैंने वो सब मेंशन किया ही नहीं, like those are the things that अगर club should be doing. I was Yeah, those are the things that club should be doing. That's not like कि उन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा कर बट दिया। वो भी उनके माय पॉइंट इज कि वो जेब से पैसा डाली नहीं है, वो भी मैं वही बोल रहा हूँ, वो लोन पे पैसा लेके क्लब को दे रहे हैं और 10-10 बिलियन हर साल अपने वापस दिया जा रहा है उनको विद इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जेब से डाला है। आज ज्वाइनिंग द सुपर लीग, आज मॉरल अगर तुम ओनर्स की बात करो, ज्वाइनिंग द सुपर लीग वाज अ ह्यूज डिजास्टर। मतलब तुम क्या सोच के, व्हेन लिवरपूल एज अ क्लब हैज वन 6 चैंपियंस लीग, अपना इतना बड़ा हिस्ट्री है उस कप के साथ, और अपने यहाँ पे ओनर्स आर रेडी टू ज्वाइन द सुपर लीग। आज ये मैं बता रहा हूँ, फैन प्राइस, अपने फैन टिकट्स जो स्टेडियम की बढ़ाई थी, दिस वाज द टाइम व्हेन यू नो मिलनर वाज आवर स्टार प्लेयर, ब्रेंडन के टाइम पे जो इतना रिवॉल्ट हुआ था, ये सब कुछ 77 यूरोस कर दिया था टिकट पे एंड ऑल दैट। आज वो लोग, आज नाइकी का भी जो हिस्ट्री है, वी स्टिल वेंट एंड यू नो साइंड अ डील विद देम। उसके वो हिस्ट्री के बाद भी तो ओनर्स कोई मॉरली भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दे जस्ट हियर टू डू बिजनेस। अगर तू बॉस्टन रेड सॉक्स की बात करे, उनका आई शेयर दिस आर्टिकल इन द ग्रुप, आई डोंट नो अ लॉट ऑफ यू रेड इट और नॉट। बॉस्टन रेड सॉक्स में भी ये इशू आया बिकॉज ऑफ कहाँ वो एक टाइम पे टॉप क्लब था वहां पे, एंड नाउ दे आर इनटू अ फ्री फॉल जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ साइनिंग ऑफ प्लेयर्स। Yeah, that's the thing. Like, you know, ये जो ownership group है, it doesn't have like, you know, that much of a like billions of dollars. So they are not going to invest anyway. They are going to insist on this model that, you know, तुम like sell, buy, and like you will have like certain equity investment from the outside. Like in Manchester City can afford to have like, you know, 500 billion. उससे तो कंपेयर करना ही नहीं है अपने। Yeah, सिटी, so PSG and Chelsea, Madrid, Barca को हटा। So that's all my point. My like a larger, not larger, like a small point is like we have to keep our expectations like moderate. We will not be able to spend like 100 million a season. Like there will be seasons where we will not spend money at all. So like this is the way that our club functions. Like fans just have to accept it. Like arguing otherwise is not going to change anything. नहीं, वो तो चेंज कर सकते तो अपने ही खरीद लेते, बट चलो ठीक है, वो तो हो नहीं सकता है। मुझे निकलना है, but can either of you stop the recording? नहीं, I think I'll just wrap this up finally, है ना? 1 मिनट का अगर समय देते हो तो ठीक है। So
एंड वन मोर पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अपना यानी जो डेट भी था वो भी रेडबर्ड ने आगे सब क्लियर कर दिया था, तो वैसा भी नहीं कि वी आर इन अ लॉट ऑफ डेट राइट नाउ और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो थोड़ा तो जेब से एक लेवल पे तुम पहुंचने के बाद तुमको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा टू मेंटेन दैट लेवल। दैट इज ऑल माय पॉइंट राइट नाउ। बिल्कुल। गो ऑन। और इस बात का सार ये निकल रहा है कि देखो मतलब धवल जो कि शुरुआत में भी एकदम मतलब एफएससी को वो कर रहा था, तो आखिर में वो थोड़ा सा मेलो डाउन हुआ था, वो बोल रहा है कि नहीं मतलब कुछ फ्लॉज नहीं, है, तो हमको those हमको were your रियलिटीज assumptions. Those were your हमको assumptions to, रियलिटीज like, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, है ना। बिल शेंकली ने तो भले ही कहा था बास्टर्ड ऑफ look, इनविंसिबिलिटी okay, बना दो, okay, है ना, ऐसे just one thing, आसान one थोड़ी thing होता about है। that. एक ही सुन, या जो लोग हैं ना बिल शैंकली का बैंड बजाते हैं, like, you know, if you actually want the way Bill Shankly wanted club to run, you would be in League 2. So I don't know what those people really think. एनीवे ए अभी एक्चुअली एक ही वन क्वेश्चन सॉल्यूशन। टू यू धवल, अगर अपने थोड़ा बहुत प्लेयर्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर दे, डू यू थिंक वी कुड हैव वन अ लॉट मोर ट्रॉफीज व्हेन अपने अपने पीक पे थे? I think हम last season league जीत जाते if we had like maybe like even one extra player in center back as good. Yeah, I don't deny that. Also, क्योंकि अपने डिफेंस से इफेक्ट पड़ा अपने फॉरवर्ड लाइन पे भी, and then like everything went to shit. So it was just like domino effect. So if we were sorted in like maybe center back position last season, if we had one more player, if that risk was not taken, we probably would have won like at least 1 or 2 trophies last season. प्रिसाइजली ये पूरे झगड़े का सार यही है, मतलब कोई प्रो एफएसजी एंटी एफएसजी नहीं है, वी आर ऑल प्रो लिवरपूल, प्रो ट्रॉफीज, एंड वही है। और जैसा धवल ने बोला कि हमको हमारी एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट करनी पड़ेगी, या तो फिर भगवान से दुआ करो कि अंबानी अपना क्लब को खरीद ले, ठीक है। सो ऑन दैट नोट विल बी एंडिंग आवर पॉडकास्ट। अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाकी यूजुअल जो चीजें करते रहते हो करो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू एलएफसी अहमदाबाद। Yeah, see you. All see you. Bye. Thank you for having me. बाय बाय। Bye. रोशन कर दिया बंद।